हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज हम ट्यूलिप फ्लावर बनाते हैं। इसको आप बुके के जैसे भी यूज कर सकते हैं। सबसे पहले हम मैजिक रिंग में 6 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। लास्ट में हम स्लिप स्टिच करके और चेन वर्क कर लेंगे। अगले राउंड में हम हर एक स्टिच में 2 सिंगल क्रोशे करने वाले हैं। तीसरे राउंड में हम फिर से 2 सिंगल क्रोशे बनाएंगे हर एक स्टिच में। अगर आप फ्लावर को थोड़ा छोटा रखना चाहते हैं तो एक स्किप करके और एक इंक्रीज कर लेंगे। इसके बाद से हम हर एक स्टिच में एक सिंगल क्रोशे करेंगे और ऐसे हम 8 रोज बना लेंगे। सारे रोज बन जाने के बाद से हम धागे को थोड़ा बड़ा काट लेंगे। थोड़ा सा कॉटन भरने के बाद से हम दोनों साइड से सिल लेंगे, जिससे कि फ्लावर का बग बन जाएगा। धागे को अच्छे से बांधने के बाद से हम नीचे की तरफ से निकाल के कट कर लेंगे। ऐसे ही हम 2 से 3 और ट्यूलिप बना लेंगे। स्टेम बनाने के लिए आप वायर भी यूज कर सकते हैं। अभी मेरे पास वायर नहीं है तो मैं धागे से ही स्टेम बनाने वाली हूँ। इसके लिए हम स्लिप नॉट करके और फंसा के 15 से 20 चेन करेंगे। आप अलग से बना सकते हैं या फिर यहीं पे 6 चेन करके उसके बाद से एक सिंगल क्रोशे, एक हाफ डबल क्रोशे, फिर एक डबल क्रोशे, फिर हाफ डबल क्रोशे और सिंगल क्रोशे करके स्लिप स्टिच कर लेंगे तो आपका लीव्स बन जाएगा। बैक में हम हर एक चेन में स्लिप स्टिच कर लेंगे। सारे ट्यूलिप्स बनने के बाद से आप इसको एज अ एप्लिक यूज कर सकते हैं या फिर एक बुके भी बना सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।